हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीडियो लेक्चर सीरीज। जैसा कि आप सबको पता है, हम सैनिक स्कूल और आरएएमसी के लिए प्रिपरेशन वीडियोस बना रहे हैं। एंड एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन्स दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद पर्सपेक्टिव टू योर एग्जामिनेशंस, बिकॉज एक कंपल्सरी क्वेश्चंस वी ऑलवेज सीक इन द एग्जाम अबाउट प्रीपोजिशन। सो मेक श्योर यू view this video properly and make sure you make notes. Okay, so now let's first understand कि preposition होती क्या है, what a preposition actually is. So preposition says it is a word which is placed before a noun or a pronoun. ठीक है, noun या pronoun के पहले लगता है ये, to show what? To show a relation in which the person or thing denoted by the noun stands to something else. ठीक है, कि दो चीजों के बीच में हमारे पास एक रिलेशन बना रहा है कौन? द वर्ड preposition. ठीक है, now let's understand what are the examples of preposition and where do we use it. So preposition के basic example क्या होते हैं? For example, we say for, ठीक है, though, although, between, among, all are these examples of prepositions. See, the book is on the table. So see here, two things are there in this sentence. एक तो हम टेबल की बात कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरी हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सेकंड थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट द बुक. सो दोनों चीजों के बीच में रिलेशन कैसे पता चल रहा है? बुक और टेबल के बीच में क्या रिलेशन है? वेदर इट इज वो टेबल के नीचे पड़ी है बुक, उसके ऊपर पड़ी है, उसके साइड में पड़ी है. हाउ आर वी गेटिंग टू नो वेयर द बुक एग्जैक्टली इज? बाय द यूज ऑफ दिस प्रीपोजिशन ऑन. नाउ दिस क्लियरली इंडिकेट्स कि टेबल के ऊपर बुक पड़ी है, राइट? सो दिस इज द रिलेशन प्रीपोजिशन टेल्स अस. ठीक है, Let's look at example number 2. The pen is in the pen stand. अब पेन और पेन स्टैंड के बीच में क्या रिलेशन है? कि पेन जो है वो पेन स्टैंड के अंदर है. इट कुड ऑल्सो बी पॉसिबल कि पेन बाहर भी पड़ा हो सकता है ना. इट कुड बी अलोंग द साइड ऑफ द पेन स्टैंड. इट कैन बी एनीवेयर अराउंड. द स्काई इज अबव अस. सो हियर अबव is actually telling us the preposition. ठीक है, the relation between the two objects है. one is sky and the other one is us. हमारे और sky के बीच में क्या relation है? that is it is above us. so this is the preposition we are using here. एक और example देखते हैं. he came with us. ठीक है, वो he is the first one and us is the second one. दो चीजें होगी ना, दोनों के बीच में क्या relation है? कि वो हमारे साथ आया. he came with us. so this is how we use preposition. preposition से हम दो चीजों के बीच में link बनाते हैं and we try to understand how things are or what is the scenario going on. So children, पहली preposition जो हम आज पढ़ने वाले हैं, the first preposition that we are going to study is at, which comes under the category of preposition of time. ठीक है, preposition बहुत सारे तरीके की होती है. There is preposition for time, there is preposition for place, there is preposition for direction. The first one जो हम पढ़ रहे हैं, that is preposition of time. All the preposition which are related to time. ठीक है, number one is at. At तो हम सबने सुना, we all have heard of it. जैसे कि I came at 6 o'clock. है ना, तो we are telling a specific time कि हाँ भाई हम इतने बजे पहुंच गए थे, right? So at is used to indicate when something happens. ठीक है, किस टाइम कोई इवेंट हुआ उसको बताने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, I told you I came at 6 o'clock. So it's a event, right? कि मैं वहां पे पहुंचा, कोई चीज हुई है ना. So when something happens, उसको रिपोर्ट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? We use the preposition at. ठीक, we use at with clock times. Clock times जैसे 6 o'clock I told you. Example, periods of the year. ठीक है, जैसे कि at the summers, at the winters, and periods of the day, festivals, etc. But we don't use at with the morning, evening or afternoon. लेकिन हम at को कभी भी morning, evening या फिर afternoon के साथ use नहीं करते हैं. ठीक है, now let's see some examples that will help us understand the use of preposition at more properly. ठीक है, the train left at 8 o'clock, as we have studied in its definition that it is used with clock times, and I'll give an example also. So यहाँ पे हमारे पास ये clear हो गया. ठीक है, she used to go to the temple at Dussehra and Diwali. So as we have studied कि हम at को festivals के साथ use करते हैं. So she used to go to temple at Dussehra and Diwali, right? He came here at the weekend. ठीक है, period of time. So at the weekend. Then she married at the age of 20. कि जब वो 20 years की थी तब उसने क्या कर ली? शादी कर ली. ठीक है, I called on my friend at night. So at day, at night also we can use this preposition. ठीक है, the last one is we rested at noon, dawn, dusk. ठीक है, dawn और dusk क्या होता है? Dawn is in the early morning, जब ना तो सूरज properly निकला होता है और ना ही रात खत्म हुई होती है, right? And dawn is opposite in the evening when neither it's night nor it's the day. So we rested at noon. We rested at noon, dawn और dusk. So इन तीनों के साथ ही हम at use कर सकते हैं.
Clear with you all? So I hope आपको at का यूज करना समझ में आया होगा. At is not just used with time. At को हम places के साथ भी यूज करते हैं. That we will study when we come to preposition of places. ठीक है? Right now हम at को सिर्फ time के reference में देख रहे हैं. All of you are clear with these examples? Now let's proceed to the next preposition. So this preposition is in. Now we will try to understand where do we use this preposition in. In हम सभी लोग, we all of us use in our common language whenever we talk to someone in English or we write down some essays or some sentences. The most common preposition I think is in, and we use it almost everywhere. Now let's first understand how do we use it for time. Now as I told you, at हम कब use करते हैं? At we use for a specific time event, है ना? कोई चीज किसी टाइम पे हुई तो हमने वहां पे at use करा, ठीक है? पर इन के साथ क्या है? इन इज यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि यहां से एक टाइम शुरू हो रहा है एंड इट इज एक्सटेंडिंग टिल सर्टेन अदर लेंथ. ठीक है, जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है यहाँ पे सीजन. ठीक है, द सीजन इज बिगिनिंग and it is ending. कुछ महीनों के लिए है ना, उस सीजन के दौरान if something happens during that time period, so we will use the preposition in. So we are not here very specific with the time. यहाँ पे हम किसी time duration के अंदर events की बात करेंगे. So let's see what does it say. It is used to indicate the period of time in which something happens. So attention, we have to pay that it is a period of time and not a specific time. We use in with centuries. Centuries is 100 years long period, right? Seasons, months, periods of the day, morning, evening, afternoon. जैसे कि हमने पढ़ा था कि at हम morning, evening, afternoon के साथ यूज नहीं कर सकते हैं. What should we use in place of at? We should use in there. ठीक है. English literature flourished in the 16th century. So here's one example कि English literature जो है वो कब flourish हुई, मतलब कब बहुत ज्यादा popular हो गई? In the 16th century. Right? So 16th century is a long period. यहाँ से start हो रहा है और 17th century के end तक चल रहा है, beginning तक चल रहा है, right? So here we can use the preposition in. Let's see other examples that help us understand the preposition in better. She was born in 1990. So 1990 is a complete time period of 1 year, right? They visited this place in summer. अब summer जो है कुछ महीनों का period है, ऐसा तो नहीं है it's a specific time event कि 2 बजे summer हुआ और गायब हो गया, right? That's not happening. He called on me in the evening. Evening is also a time duration है ना? It's not a specific one. Then the theft took place in the daytime. Daytime is again a time period. So जहां पे भी आपको time period दिखेगा वहां पे we will use the preposition in. My father went to the USA in October. October again एक 30-31 days का हमारे पास क्या है? Time duration है. It all happened in 3 minutes, 3 hours, 3 days or 3 years or whatever number of years. ठीक है. So with minutes, hours, days and years हम क्या use करेंगे? We will always use the preposition in. We cannot use at with minutes, hours, days or years. I hope all of you will keep this in mind and don't make any mistakes in your exams. Okay? Now let's look on to the next preposition. The next preposition is on. On तो हम सबने सुना है and we also use it in our common language just like in. So on is used with days, dates, birthdays, anniversaries, etc. So on का specific use क्या है? हम उसको days के साथ use करते हैं, ठीक है? We use it with particular dates, ठीक है? Then we use it with birthdays and anniversaries. Like Mahatma Gandhi was born on 2nd of October, right? So dates के साथ हम on use करते हैं. Let's see some examples that will help us understand better. We went to see a movie on Tuesday. As we studied कि हम ऐसे days के साथ use करते हैं. So day, Tuesday, Wednesday, Monday, anything. We will use on with it, right? He was born on October 3rd, 1980. वो कब पैदा हुआ था? He was born on October 3rd. Then we congratulated him on his birthday. Birthdays के साथ भी हम on use करते हैं, right? We gave them a gift on their 20th marriage anniversary. So anniversaries के साथ also we use on. So on का बहुत ही simple और specific use है. We use it with days, dates, birthdays and anniversaries, right? I hope we are clear with this. Now let's look on to the next preposition. Before we proceed to next preposition, I have a small note to make for you and you pay attention to this. What does it say? We use on with morning, afternoon, evening, etc. when they are modified. हमने पढ़ा था ना कि हम क्या use करेंगे? In use करेंगे with morning, afternoon and evening. So there are certain places where we are going to use the preposition on with these 3 rings. कब use करेंगे? When they are modified. Modified means some kind of adjective or some speciality has been given to it. For example, let's see. They reached here on a hot afternoon. So afternoon को यहाँ पे थोड़ा सा define करा है हमने. We have said that it's a hot afternoon. So with such afternoon, morning or evening, we will use on.
ठीक है. Another example, people did not come out of their houses on a night like this. हम एक particular night की बात कर रहे हैं. We have defined that night. ठीक है. So उसके साथ हम preposition on use करेंगे. Alright. We went for fishing on a pleasant morning. What kind of morning? Pleasant morning. अगर सिर्फ morning होता, we can't say we went for fishing on morning. Morning कोई चीज थोड़ी ना जिसके ऊपर हम चले जाएंगे, right? But when it is specific, when it is a modified, और हम उसके साथ कोई condition attached है या हम उसे कोई adjective उसके साथ use कर रहे हैं, then with morning, evening, afternoon, we will use the preposition on. I hope you'll remember this. Now let's look on to the next preposition. So the next preposition is during. Now during is nothing different from the preposition in. In और during में कुछ खास फर्क नहीं होता है. The only thing is in was like let's say we say something happened in October. कि अक्टूबर के बीच में कहीं पे कोई चीज हुई. It could happen on 15th October. It could happen on 30th of October, 1st October, any day. किसी भी particular date पे उस time period के अंदर something could happen. Then we would have used the preposition in. Right? पर हम ड्यूरिंग कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग हम तब यूज करेंगे व्हेन वी फील दैट समथिंग इज गोइंग ऑन थ्रू आउट दैट टाइम पीरियड. अगर लेट्स से आई हैव बीन स्टडिंग ड्यूरिंग अक्टूबर, ठीक है, कि मतलब मैं पूरे अक्टूबर में थ्रू आउट अक्टूबर आई हैव बीन स्टडिंग, ठीक है, नॉट ऑन अ पर्टिकुलर डे. इट्स नॉट अ वन टाइम इवेंट दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड. इट्स अ कंटिन्यूअस इवेंट विच इज हैपनिंग थ्रू आउट द टाइम पीरियड. ठीक है, सो ये चलता रहेगा. Let's see. During may be used instead of in. As I told you that they don't have a very significant difference with periods of the day, months, seasons, years, decades. Same way जैसे हम in use कर रहे थे, ठीक है. But here the slightly different thing is that something continues throughout the whole of a specific period. कि जो भी event है, it will continue. जैसे कि let's look at this example. During the war, many people were killed. It's not कि वॉर में ऐसा नहीं हुआ कि एक सेकंड में सब मर गए एंड फिनिश ऑफ हो गया, राइट? दैट्स नॉट हैपनिंग, है ना? सो ड्यूरिंग द वॉर, जितनी देर भी वॉर चली, इट मे बी फॉर ईयर्स, इट मे बी फॉर डेज, और इट मे बी जस्ट फॉर फ्यू आवर्स मे बी, बट ड्यूरिंग दैट एंटायर पीरियड, जितनी देर भी वॉर चल रही थी, पीपल वर डाइंग. इट वॉज अ कंटिन्यूस थिंग. अभी कोई और मर गया, देन समवन एल्स डाइड और मार्टर्ड, व्हाटएवर. सो वी विल सी दैट इट इज अ कंटिन्यूस इवेंट. ठीक है. वी वर्क ड्यूरिंग द डे एंड स्लीप ड्यूरिंग द नाइट. हम दिन भर काम करते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं वी वर्क फॉर अ सेकंड ओनली और फॉर अ मिनट ओनली, राइट? एंड वी स्लीप ड्यूरिंग द नाइट. हम पूरी रात सोते हैं, ठीक है. सो इट इज अ कंटिन्यूस इवेंट. इट्स नॉट अ इवेंट विच इज हैपनिंग नाइट के बीच में एक बार हम सो गए. दैट्स नॉट हैपनिंग, राइट? बट आई नो सम ऑफ यू डू दैट. एनीवे, वी ट्राई टू कॉन्टैक्ट पीपल ड्यूरिंग अक्टूबर. कि हम लोगों को कब कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करते हैं? ड्यूरिंग अक्टूबर. जैसे ड्यूरिंग अक्टूबर मीन्स द एंटायर ऑफ अक्टूबर. ऐसा नहीं है दे आर अगेन डूइंग इट ऑन अ पर्टिकुलर डे. दे आर डूइंग थ्रू आउट द मंथ ऑफ अक्टूबर. During the 90s, many taxes were imposed. 90s का मतलब क्या हुआ? The years that were before 2000s. जैसे आज हमारे पास 2021 चल रहा है ना? So when it was 1991, 1992, like that. So that's it's saying during the 90s, many taxes were imposed. कि जो पूरा पीरियड था, पूरा का पूरा डेकेड था 90s का, उस वक्त काफी सारे taxes imposed हुए थे. So it is a continuous event. ऐसा नहीं कि सिर्फ 1991 में हुए या फिर 1996 में हुए. Throughout the decade. ठीक है. She used to ring up many times during the week. ठीक है, कि वो फोन अक्सर करती थी throughout the week. मतलब वो हर हफ्ते में, I mean, हर दिन फोन करती थी. ठीक है. So therefore we are using the word during. During the journey, I came to respect her. कि मतलब they must be some strangers or whatever they are maybe, but he must have spoken to her and he gradually gained respect for her, है ना? So here what we are saying is that it's not a one time event. ऐसा तो नहीं होता हम किसी से मिले और अचानक से हमारे दिल में उसके लिए रिस्पेक्ट आ जाती है. That doesn't happen, right? We only after we get to know someone हमें वो पता चलता है इंसान कैसा. It's a slow process, right? So it's saying during the journey, कि मतलब उनकी जर्नी जो हो सकता है it could be for some months they might be traveling, है ना? So during the journey I came to respect her. So during हमने देखा हम कब यूज करेंगे? जब एक इवेंट कंटिन्यूस एक टाइम पीरियड के अंदर चल रहा है and it's not a one time event, right? Now let's look on to the next preposition. So the next preposition is by. No, bye bye नहीं करना, अभी वीडियो देखनी है, ठीक है? Let's understand what is by. So by हम कब यूज करते हैं? by हम तब यूज करते हैं when we see that the event की latest date क्या है, या फिर by what maximum time we can finish that given work or that given task. See,
by is used to indicate the latest time at which an action will be finished. Alright, कि मतलब कब maximum time तक उसे finish किया जा सकता है. For example, he will finish this work by 5 o'clock. इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे 5 o'clock होंगे उसका काम finish हो जाएगा. He may finish it at 4:30 also or even at 3 o'clock. ठीक है? But the maximum time he is going to take is 5 o'clock. वो 5 o'clock से ज़्यादा time नहीं लेगा. ठीक है? By the time the morning was up, कि मतलब they are talking about a specific time, कोई conversation चल रही है, they are saying, by that time, तब तक the moon was up, right? You must come to me by 8 a.m. कि आपको मेरे पास 8 a.m. तक पहुंच जाना चाहिए, not later than 8 a.m. ठीक है? So जब हम by use करते हैं, it means we cannot get to that place after that time. ठीक है? हमें उससे पहले पहुंचना है, alright? Applications must be received by 10th of May. 10th of May is the last date till which you can send your application. ठीक है? After that, they will not receive any of the applications. By can be used instead of during with almost the same. ठीक है? काफी सारे places पे we can also use by in place of during, because here the event can happen till 5 o'clock है ना, the event can happen till 8 a.m. हम 8 बजे तक पहुंच सकते हैं, this is a duration है ना, and same the application can be received till 10th of May, तब तक चल सकता है. So here we can use during also. We took rest by day and traveled by night. So you remember हमने in the previous slides we had seen that we took rest during day and we slept during night, है ना? So in place of during we can also use by. ठीक है? That is हम रात तक we will sleep and दिन तक हम काम करेंगे. ठीक है? By mid-afternoon, about 5,000 people had visited the exhibition. कि mid-afternoon means 12 o'clock in the day, तब तक 5,000 लोगों ने विजिट कर लिया था. सो इट्स अगेन लेटेस्ट टाइम है ना, कि 12 बजे तक. इट कुड हैव बीन दैट पॉसिबल एट 11:30 आल्सो दे माइट हैव रीच्ड है ना, बट यू आर मेकिंग अप्रोक्सीमेशन टिल दिस मच ऑफ टाइम दिस इवेंट हैपेंड. और इट कैन ऑल्सो मीन लाइक ड्यूरिंग के साथ कि 12 बजे तक लोग आते जा रहे थे. ऐसा तो नहीं है सडनली 5,000 पीपल ड्रॉप्ड इन. इट वाज अ कंटिन्यूअस इवेंट है ना, पीपल वर कमिंग. सो देयर आल्सो इन प्लेस ऑफ ड्यूरिंग वी कैन यूज बाय. Clear with this? I hope you understood the difference and you understood the similarity as well. Now let's proceed on to the next preposition. So next preposition is for. Now let's understand what is the purpose of for. For is used for periods of time to indicate how long an action lasts. कि कितने लंबे समय तक कोई चीज होगी, कितने लंबा ड्यूरेशन होगा उस इवेंट का. ठीक है? There we use for. It is generally used with the perfect tense, but is also used with the other tenses. जैसे हम सिर्फ perfect tense के साथ यूज करते हैं, but लेकिन कुछ other tenses भी हैं जिनके साथ हम इसे यूज कर सकते हैं. Let's look at some examples to understand. They have lived here for 5 years. कि 5 साल तक वो लोग यहाँ पे रहे हैं. Okay, just a moment. They have lived here for 5 years. Now 5 years का क्या मतलब है हमारे पास यहाँ पे, कि वो 5 years से यहाँ पे रह रहे हैं. They are continuously living here. ठीक है? That is एक इवेंट का ड्यूरेशन है. It's not that they lived for 1 year, then they went away, then they came back, then lived 1 year. They have been staying there for continuous of 5 years. It rained continuously for 12 hours. I was about to say 12 years. Now let's see what does 12 hours. Here what it is indicating is कि जो बारिश हो रही थी कब तक हो रही थी, 12 घंटे लगातार होती रही. So it's telling कि एक इवेंट कितने लंबे ड्यूरेशन तक चलता रहा. ठीक है? We stayed there for 15 days. So they must have gone to some trip. ठीक है? और वो वहाँ पे कितने दिन के लिए रुके? They stayed there for 15 days. Again it's telling कि एक इवेंट का कितना ड्यूरेशन है. They have been working for 2 hours. कितने घंटे तक उन लोगों ने काम करा? 2 hours. Have you worked for 2 hours? Did your homework? She will not be here for another 3 hours. वो यहाँ पे और 3 घंटे के लिए नहीं रहेगी. ठीक है? So with all of these examples, what are we seeing here? कि हम for कब use कर रहे हैं? हम for तब use कर रहे हैं when we know that the action is going to take a specific time period. है ना? जैसे यहाँ पे 5 years, it's a specific time period. Then 12 hours, 15 days, 2 hours, 3 hours. ठीक है? कोई action कितनी देर में खत्म होगा? Maximum time it's going to take. For that purpose, we use for. ठीक है? For के other भी uses हैं, but as I told you right now, we are just studying preposition of time. So हम सिर्फ time के reference में अभी सारी prepositions देख रहे हैं. Alright? Now let's go on to our next preposition. So next preposition is since.
since तो आप सबने सुना भी होगा, and you must have seen. Have you seen those t-shirts जिनके ऊपर लिखा होता है since 1980, since 1996? What does that mean? Since का मतलब होता है कि कोई event past में शुरू हुआ था, ठीक है, and it's still continuing. ठीक है, it the factory or the company, you know, it might have started in 1980 and it is still running its production. वो अभी भी t-shirts बना रही है. So on its t-shirt it's writing since 1980. ठीक है, you clearly understood what does since use for? Since को हम तब use करते हैं कोई event past में शुरू हुआ था और वो अभी भी चल रहा है, तो हम उसके लिए since use करेंगे. So I'll just read out. Since is used with the point of time in the past from which some action began and it continues till the time of speaking. जब तक हम बोल रहे हैं तब भी वो काम चल रहा है. It's generally used with the perfect tense. इसे हम perfect tense के साथ use करते हैं. Let's look at some examples. जैसे 1980 वाला example, same example is here also, but in a different way. He has lived here since 1980. वो 1980 से यहाँ पे रह रहा है, मतलब अभी भी रह रहा है. He's still staying there, right? Everything has changed since the last summer. ठीक है, last summer से अभी तक चीजें change हो रही हैं. ठीक है, it's not a one time event. ठीक है, it has not rained since the end of जून की एंड ऑफ जून से अभी तक रेन नहीं हुआ है ना. इट्स नॉट दैट कि एंड ऑफ जून से रेन नहीं हुआ उसके बाद अभी भी रेन हो गया एंड समथिंग डिफरेंट अब वापस बंद हो गया. इट्स दैट फ्रॉम दैट टाइम अंटिल नाउ इट हैज नॉट रेन्ड. He had been writing novels since he was 30 years old. कि वो जब 30 years old था तब उसने novel writing start करी थी and he is still writing it. So it has started in the past, ठीक है, and is still continuing. So all the events that start in the past and still continue till the time you are speaking it, there we use the preposition since. And since हम ज़्यादातर if you just want to remember, since हम years अगर कहीं पे भी तुमको मिल रहे हैं and you are seeing that, you know, it's looking like event is still happening, you will use directly the preposition since. Clear? Now let's look on to the next preposition. So our next preposition is slightly related with the understanding of since. हमने since कब use करा था? Since we use जब something started in the past, है ना. अब वो past में कब start हुआ, ठीक है, that thing is told by the preposition from. ठीक है, when did the particular event start? So from indicates the starting point of action in the past or future, and since हम सिर्फ past के लिए use कर रहे थे, from can also be used for future. Okay, it is always used with to or till, और sentence के ending में हम to या till use करते हैं if our event is going to finish. ठीक है, so कब तक finish होगा उसके लिए हम till या फिर until use करेंगे. They lived here from 1980. So कब start हुआ वो event, कब रहना start करा उन्होंने 1980 में, और कब तक रहे वो till और until 1990, for a decade almost. So from is used for the starting point and till या until हम use करेंगे for the end point of the event. Okay. We worked from morning to till the evening. ठीक है, हमने morning में काम करना start करा, that is the starting point, and what is the end point? Till the evening. Right? Simple. I think that's a very simple preposition. She lived with them from the age of 20. So now she must still be living with them. ठीक है. So therefore we are not using till or until. Till or until I told you जब event finish हो जाता है उसके लिए हम use करते हैं. So this event is not finished. वो जब 20 years की थी, from then she is still living probably. So therefore we are only using from in this sentence and we are not using till or until. Right? He lives in the office from 9 a.m. to 5 p.m. वो 9 a.m. से 5 p.m. तक ऑफिस में रहता है. ठीक है. We can also say he lives in his office from 9 a.m. until or till 5 p.m. Same meaning. She is interested in the period from 1950 to 1960. So there must be some girl who is interested in history. और history का specific part उसे कौन सा पसंद है? She likes to read about from the time period 1950 to 1960. So when is this time period starting from? It is starting from 1950. So from हम आप use करें, and for the end point we are using here to, or we can also use until or till. Clear? So very simple and very specific. And let's look on to the next preposition now. So children, our next preposition is till or until. जैसा कि आपको previous slide से मतलब समझ में आ गया होगा, till or until we use for the end period of some event, right? Till and until are used to show something happening or done up to a particular point in time and then stopping. जैसे कि हमने previous example on the previous slide we had seen that they lived here from 1980 until or till
1990 है ना. So same way the start हुआ था 1980 में और end करने के लिए we are using till or until. So same thing is being done here. Let's see. He is expected to be here until or till the end of the week. ठीक है कि week के end तक he will be here. So वो वहीं से कहीं से he must have left from somewhere from some point of time. ठीक है. But the end point is by this weekend. I was employed by the company until 1980. अब कंपनी कभी ना कभी तो एम्प्लॉय करा होगा. It must be a specific time है ना. But till when? What is the end period? It was 1980. ठीक है. You will have to wait until my return. तुम्हें वेट करना पड़ेगा. कब तक वेट करना पड़ेगा? मेरे रिटर्न तक वेट करना पड़ेगा. जैसे कि आपको नेक्स्ट वीडियो तक वेट करना पड़ेगा. For the next topic, you will have to wait until my return. Simple. So from and till until are very closely related. I hope you have understood both of the prepositions very clearly. Now let's go on to the next one. Our next preposition is before and after. Before and after, I know you already know, but let's just revise it. So the preposition before and after are used to relate events to a particular time or a particular event. जैसे कि let's say here is let's say Shalu's house. ठीक है. And here is Meena's and here is Rahul's. ठीक है. So this is Rahul, this is Shalu, this is Meena. So हम क्या बोलेंगे? Meena's house comes before Shalu. और हम ये बोल सकते हैं कि that Rahul's house comes after Shalu. ठीक है. So हमने रेफरेंस किसको बनाया? हमने एक चीज को स्टैंडर्डाइज कर दिया. इसके रेफरेंस में हम बात करें. इससे पहले, इससे बाद में. सो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, ऑल्दो आई एम टॉकिंग इन रेफरेंस टू अ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में हम एक पर्टिकुलर टाइम को स्पेसिफिक कर लेंगे, स्टैंडर्ड कर लेंगे. उसके आगे या उसके पीछे वी विल टॉक अबाउट. ठीक है. सो लेट्स सी हियर. सो नंबर 1 हियर, आई गेट अप बिफोर 6. सो 6 इज अ specific time we are talking about. और हम 6 से पहले उठ जाते हैं. Now this doesn't specify when do we wake up. It can also be possible that you are waking up at 5:59 है ना, and you can also wake up at 5:30. So लेकिन 6 एक specific time हमने देख लिया कि इससे पहले right. She returned before Monday, कि वो Monday से पहले वापस आ गई. Then they came here after 8 o'clock. 8 o'clock के बाद आए. It could be possible कि just वो 8 o'clock बज के सिर्फ 1 minute हो रहा था. Right. We went to Paris 4 years after our marriage. एक मैरिज उनका रेफरेंस पॉइंट हो गया. मैरिज एक पर्टिकुलर डेट या ईयर में हुई होगी. ठीक है. उसके 4 years बाद वो मैरिज पे गए. So this is a very simple use of before and after. So children, with this we come to end of this video. It was a short video. Now you can watch out other videos. I hope you have checked out the previous video about prepositions of time. The next video will be about prepositions of position, and I hope you learned something new in today's class. You can reach out us to at these details. I hope you'll have a good time and all the best for your examinations.